So, hey all, welcome to the IFM series of class 9th, and we have reached unit 5. What is income? So, in this chapter, we will learn what is income or incoming money and how do taxes and other deductions affect your income. So, ask any business owner and they'll tell you that cash is the livelihood of their business. So, basically, कोई भी business होगा उसका cash livelihood होगा. अब cash क्या है? Cash है personal financial planning as a petrol to your moped or scooter. ठीक है? तो एकदम पेट्रोल जैसे वर्क करता है कैश. विदाउट ईदर यू आर नॉट गोइंग वेरी फार. कुछ भी होगा, पेट्रोल नहीं, कार है, स्कूटर है, मोप्ड है, आपका पेट्रोल नहीं है तो आपका आगे तक नहीं जाएगा. ठीक है. थिंक बैक ऑन द प्रीवियस लेसन व्हेन यू हैड सम गोल्स विच यू विश टू अचीव. तो लास्ट वीडियो देखा होगा, वी नो गोल्स थे, अचीव करने थे. ठीक है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स यू हैड टू सॉल्व was the money to save. ठीक है. But where does the money come from? You need to earn and retain money from plan. You go on your earnings, spendings, and savings. A budget is a plan for managing money during a given period of time. So, what is a budget? It is a plan for managing money during a given period of time. Budgets are not made by governments. Your mother makes a budget. She tries to plan the expenditure using the available income every month. In some cases, every day. So budget is a very important thing, though it is not made by the government. Budgets are made by your mother. She plans how you are going to survive for the next month. Okay, the expenditure basically in what areas you guys are going to spend money. So what is income? Income may be defined as the true increase in the amount of wealth which comes to a person during a fixed period of time. So this can be the definition of income. Key amount of wealth, increase in the amount of wealth which comes to a person during a fixed period of time. Income may be received in cash or in kind. So, income is the money earned, whether from salary, business, profession, renting a property, sales of asset, gifting, interest on deposit, or any other source. Therefore, we can say that income is money coming in. Alright, money coming in is known as income. ठीक है. तो अब इनकम में आपको कैसे पता चलता है कि आपको कितना इनकम मिल रहा है? तो जैसे या फिर क्या चीज़ों से आपको इनकम मिल रहा है? सो डू यू रिसीव अलाउंस? यू गेट एन इनकम. डू यू गेट मनी ऑन योर बर्थडे? दैट्स एन इनकम टू. Does a doctor, lawyer, engineer get fees for his or her service? That's an income. Where do you have a job? You will receive a money salary or paycheck as it is called income. If your father or mother has a job, he or she receives a paycheck from office which indicates his or her income. If he or she is a businessman, he or she gets profit as a business income for his or her business. Then winning lotteries or card games etc. are treated as income. Gaining on the sale of house property will be considered as income too. Now what is gross income? So it is the total amount of income from the following sources of income. ठीक है. तो अब ग्रॉस इनकम जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम ग्रॉस इनकम मांगते हैं. द सैलरी इनकम फॉर द वर्क डन, profit from your business and fees received for the services one does, rental income from renting properties, gain on sale of properties and other assets, any other income. And gross income, we know what is gross income. Now net income is the income after subtracting deductions allowed under the प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. तो ग्रॉस इनकम क्या होती है? टोटल अमाउंट होता है. जैसे आपका ग्रॉस इनकम 1 लाख है, बट उससे अगर 17,000 का टैक्स कट गया एंड 3,000 आपका चला गया फॉर सपोज किसी और वाटर टैक्स में. ठीक है. तो अब आपका रह गया 80,000 ओनली एज योर इनकम. दैट इज योर नेट इनकम.
Salary is the amount for working at the office or for a certain period. So what is salary? ऑफिस में काम करते हो certain period के लिए, that is salary. ठीक है, and we should know deductions. Deductions are the amount subtracted from gross pay which result in your net pay. तो जितना भी amount आपके gross payment से हम deduct करेंगे वो सारा amount जाएगा आपके net pay में, and that will be your final payment that you will get. ठीक है, these deductions are usually taxes which are levied by the government and are called income tax. Income tax is a fee or levy charged by the government on the income earned by an individual. There may be other deductions also from the gross pay, which could be deductions or for different purposes like deductions for lunch provided by company, etc. If you want to see what kind of deductions are, you may request your father or mother to show you what their pay slips really look like. ठीक है, अब taxes क्या होता है? Taxes are fees placed on income, property or goods to support government programs. ठीक है, जितना भी fees हम government programs के लिए देते हैं, all are taxes. These programs may be local, state or central level. ठीक है, अब यहाँ पे है कि जब हम सर्विसेज यूज करते हैं, सर्विसेज लाइक आर्म फोर्स, रोड मेंटेनेंस, रेलवे एक्सेट्रा, हर चीज का हम टैक्स देते हैं. ठीक है, टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, नेमली डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, नाउ डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट ले रही है ऑन वन पर्सन एंड पेड बाय द सेम पर्सन. आपको टैक्स मिल रहा है वाटर टैक्स, आप ही पे करोगे वाटर टैक्स, आप पे ही इम्पोज हुआ है क्योंकि वो पानी आपने यूज किया है. एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स फॉर द सैलरी अर्न बाय अ पर्सन. एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन वन पर्सन and actually paid by another person. ठीक है, this is service tax paid by hotel owner. तो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो, दे टेक सर्विस टैक्स, वो होटल ओनर पे होता है, बट पे कौन करता है? हम पे करते हैं. ठीक है, देन subtracting deductions from your salary leaves you with net pay, also called your take home pay. This is important. What is take home pay? Our net pay is known as take home pay. ठीक है, और डिस्पोजेबल इनकम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो नेट पे के क्या क्या नाम है? टेक होम पे या फिर डिस्पोजेबल इनकम. इट इज द अमाउंट यू एक्चुअली रिसीव, इट्स द अमाउंट यू हैव अवेलेबल टू स्पेंड एंड पार्ट ऑफ इट टू सेव, एंड इट्स गुड starting that creating a budget, starting point for creating a budget. Now, taxes are a means of income for the government and are utilized for public spending. Public क्या money spend करता है? जो पब्लिक पे स्पेंड हो रहा है वो पब्लिक ही देगी, वो टैक्सेस पब्लिक देती है. ऐसे वेलफेयर स्कीम हो गया, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजंस एक्सेट्रा, ये सारे पब्लिक टैक्सेस होते हैं. अब एक बार ये देखो पे चेक कैसे होती है. तो एम्प्लॉय नेम है पे चेक में, ठीक है, कोड और नेम है एम्प्लॉय का, ठीक है, फिर कोड, ग्रेड कोड है कि क्या उसकी डेजिग्नेशन है, कहाँ वर्क करता है, कितना सैलरी है, किस मंथ का पे स्लिप है, कितने डेज हैं इस मंथ में, और पेमेंट किस डेट को हुई है. दिस ऑल शोन बाय अ पे स्लिप. सो बेसिक सैलरी क्या थी उसकी? इतने रुपीस की थी, 10,000 की. उसमें से क्या हुआ कि 500 डिडक्ट हो गए, देन 1000 डिडक्ट हो गए, 500, 2000. तो इतना मनी डिडक्ट होके उसका ग्रॉस पे इतना था, एंड ग्रॉस डिडक्शंस उसका इतना था, तो उसका नेट पे कितना आया? इतना. ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस कर लेना आप खुद से, इट्स वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप 500 रुपये में से 600 हटाओ, सॉरी 600 रुपये में से 500 हटाओगे तो आप पे 100 रुपीज बचेंगे. ठीक है, तो यही उसका, मैं एक बार समझा देती हूँ कि मिस्टर रमेश वर्क्स एट XYZ कंपनी लिमिटेड. When he is a senior manager in the sales and marketing department, this is the salary slip for the month of 2010. The gross salary of Mr. Ramesh is rupees 15,000. It is given on the left side of the place pay slip, and the deductions 3,000 are given on the right side. The gross pay less the gross pay deductions give the net pay.
as all salary slips may not have the same items as shown here but may vary company to company, as can be seen from his salary slip. The various salary incomes are categorized under different heads such as basic pay, city compensatory allowance, etc. These allowances are amount given by the company and from part of the gross pay. The gross deductions of Mr. Ramesh are mentioned on the right hand side, which includes income tax and other deductions. ठीक है? डिडक्शंस में क्या हुआ, इनकम टैक्स हो गया, फंड हो गया, लंच रिकवरी एंड प्रोफेशनल टैक्स आपका डिडक्ट हो गया। सैलरी कहाँ कहाँ की मिल रही थी, बेसिक सैलरी थी, फिर कंपनसेटरी अलाउंस थी, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल रही थी, फ्लेक्सिबल बेनिफिट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, तो इतना पैसा आपको मिल रहा था, उसमें से इतना डिडक्ट हो गया। ठीक है। Now we come to the end of the chapter, and here we have the summary with us. Cash is too personal financial as petrol is to car. ये हमने पढ़ लिया है। जितनी important पेट्रोल है कार के लिए उतना ही important हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कैश है। मनी कमिंग इन इंक्लूड्स इनकम अर्न फ्रॉम सैलरी, बिजनेस गिफ्ट्स, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स और एनी अदर सोर्स। पैसे कहीं से भी आ रहे हो, गिफ्ट मिल रहा है, चुरा भी रहे हो ना, बस पैसा आपके पास आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इनकम। अब ये मत कहने लगना कि इनकम के नाम पे जाकर चोरी कर रहे हो। ठीक है। ग्रॉस इनकम इज टोटल इनकम अर्नड, नेट इनकम इज गॉट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शंस अलाउड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Deductions are amount subtracted from gross pay to arrive at the net pay. Net pay is also take home pay or disposable income, and LTD is limited RSS Indian rupees. With this, we end this chapter and we will do the next chapter in the next video. Thanks for watching.